Hello everyone, welcome back to this channel. Today we will solve a few most important MCQs on family law. So those who are preparing for All India Bar examination this year, this video lecture will be very helpful to you all. Okay, so these questions are very expected question. Okay, so please don't skip the video. Okay, अच्छे से आप लोग देखना. The first question is our what is the legal age for marriage in India for males? Okay, मेल्स के लिए मैरिज का लीगल एज कितना है? ऑप्शंस आर 21 years, 18 years, 25 years and 20 years. So in this case the correct answer would be option A. Okay, that means 21 years. That means इसके लिए कितना minimum age requirement है? That is 21 years requirement. Okay, so in this case क्या होगा? In this case option A would be the correct answer. Okay, so now moving to next question. What is the primary legislation governing the adoption of a child in India for the Hindus? हिंदूज के लिए ओके हिंदूज के लिए दो चाइल्ड एडॉप्शन का प्रोविजन कौन सा एक्ट में दिया गया है? सो देखिए Options are the Hindu Marriage Act 1955, Parents and Wards Act 1890, the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, and the Juvenile Justice Act 2005. So in this case, the correct option would be option C. That means the Hindu Adoption and the Maintenance Act 1956. That means जितना भी चाइल्ड एडॉप्शन किया जाता है एंड मेंटेनेंस के बारे में जितना भी प्रोविजन दिया गया है रिगार्डिंग ऑल द हिंदूज. Okay, so all the provisions are given as per the provision of Hindu Adoption and Maintenance Act. Okay, so this is the governing act of all the adoption of children in India. So in this case क्या होगा? In this case option C would be the correct answer. Okay, so now move to next question. Next question देखिए, under the Muslim personal law. Okay, Muslim personal law में क्या देखिए, what is the term for a husband's right to divorce his wife unilaterally? Under the Muslim law, what is the term for a husband's right to divorce his wife unilaterally? That means क्या बोला, जो मुस्लिम लॉ में हस्बैंड होता है वो जब अपने वाइफ को डाइवोर्स देता है यूनिलेटरी, दैट मीन्स एक तरफा. दैट मीन यूनिलेटरी का मीनिंग क्या है? देखिए, यूनिलेटरी का मीनिंग क्या है? यूनिलेटरी का मीनिंग क्या है? मीन्स एक तरफा. ओके, एक तरफा. ओके, यूनिलेटरी का मतलब क्या है? एक तरफा. मीन्स मुस्लिम लॉ में जब एक हस्बैंड एक वाइफ को डाइवोर्स देता है यूनिलेटरी, देन उस डाइवोर्स का नाम क्या है? ऑप्शन आर देखिए, ऑप्शन आर खुल्ला, देन तलाक, mahar and nikah. So in this case the correct option would be option B, that means talaq. Okay, so in this case option B would be the correct answer. Okay, so now moving to next question. Next question is what is the minimum age? Okay, minimum age for a female to marry according to the Prohibition of Child Marriage Act 2006. Okay, का मिनिमम एज बोला गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. ओके, देखिए, लेट्स सी द ऑप्शंस आर 16 years, 18 years, 21 years and 20 years. So in this case the correct option would be option C, that means 21 years. तो ये याद रखना पड़ेगा कि earlier it was 18 years. Okay, but later on it was increased to later on it was increased to 21 years. Okay, so in this case क्या होगा? In this case option C would be the correct answer. Okay, option C would be the correct answer. So now moving to next question. Next question is देखिए, in case of separation, okay, in case of separation, which parent is generally favored for custody of a child below 5 years? Okay, 5 years under the Hindu law. That means अगर कोई भी एक पेरेंट्स का डाइवोर्स होता है, ठीक है, देन एंड उन लोग का एक चाइल्ड भी है एंड दैट चाइल्ड इज ऑफ अंडर द 5 years.
ओके अगर 5 साल से कम है उस बच्चे का एज, देन दैट टाइम किसको ये कस्टडी, बच्चे का कस्टडी दिया जाएगा? सो ऑप्शन सर देखिए, द मदर, द फादर, द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द कोर्ट डिसीजन, कोर्ट डिसाइड्स। ओके इन दिस केस the correct option would be option A, that means the mother. That means this is very important question. That means अगर एक child का एज 5 साल से ज़्यादा है, then it will be decided by the court. Okay, but if less than, okay, if less than 5 years, then the custody of the child will be given to the whom, to the only mother, only mother. Okay, only mother. ठीक है, अगर 5 साल से नीचे है देन उसका कस्टडी सिर्फ मदर के पास ही जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 years, देन द कोर्ट विल डिसाइड ओके टू whom the custody will be given, either father or mother. Okay, so in this case क्या होगा? In this case option A would be the correct answer. This is very important question, you know. Okay, now move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए वैलिड मैरिज? ओके ऑप्शंस आर देखिए, मैरिज विदाउट सेरेमनी, मैरिज विदाउट कंसेंट, मैरिज विद कंसेंट, मैरिज ऑफ ए माइनर। दैट मीन्स एज पर द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कौन सा मैरिज है जिसको वैलिड मैरिज माना गया है? सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन विल बी मैरिज विद कंसेंट। Okay, marriage with consent, with consent. That means मैरिज विथ कंसेंट, अगर मैरिज में कंसेंट है तभी इस मैरिज को वैलिड माना जाएगा। ओके सो इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड मैरिज विदाउट ceremony, this is not correct. Marriage without consent, this is not correct. Marriage of a minor, this is also not correct. So in this case option C would be the correct answer. So now moving to next question. Next question देखिए, what is judicial separation? This is very important question. Okay, what is judicial separation? देखिए ऑप्शंस आर, देखिए ऑप्शंस आर, ए लीगल प्रोसेस allowing spouse to live apart while remaining married. Option B, a divorce decree, a temporary custody order and an adoption process. Okay, so in this case क्या होगा? The correct option would be option A. That means option A. Okay, so in this case option A would be the correct answer. Meaning क्या है देखिए, what is judicial separation? Judicial separation means it is a, it is a legal process allowing a spouse, husband and wife को अलग रहने के लिए दिया जाता है while they are married. मेरिट है लेकिन उन लोग बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उन लोगों को अलग से रखा जाता है। ठीक है, दे कैन नॉट लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। ओके, दे दे कैन नॉट लिव और स्टे टुगेदर अंडर वन रूफ। ओके, so this is called judicial separation. So in this case क्या होगा? In this case option A would be the correct answer. So now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, विच एक्ट रेगुलेट्स द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स? दैट मीन्स व्हाट एक्ट रेगुलेट्स द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ्स, चाइल्ड एंड which acts regulate the maintenance of wives, children and parents? The options are देखिए, the Hindu Marriage Act 1955, the Hindu Succession Act 1925, the Maintenance and the Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007, and the Guardians and the Wards Act 1890. So in this case the correct option would be the Maintenance and the Welfare of the Parents and Senior Citizens Act 2007. So in this case option C would be the correct answer. That means question में क्या बोला? Which act regulates maintenance of wives, children and parents? वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का मेंटेनेंस के लिए कौन सा एक्ट में सब प्रोविजन दिया गया है? दिस इज अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में, और उसका प्रोविजन हम लोगों को मिला था देखिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में जहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स के बारे में बोला गया था। सो नाउ इट हैज़ बीन रिपील्ड विथ BNS अंडर सेक्शन 144 of BNSS, that is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, सो इन दिस केस क्या होगा? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is, what is the term for the financial arrangement, okay, made between the divorcing spouse for the support of their children? Suppose इस कपल का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, देन आफ्टर द डाइवोर्स चाइल्ड के लिए जो फिनेंशियल अरेंजमेंट होता है, उस फिनेंशियल अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? सो ऑप्शन सर देखिए, मेंटेनेंस, alimony, child support, and spousal support. So in this case, the correct option would be option C. That means child support. That means option C would be the correct answer. So now on to next question. Next question देखिए. Next question is which of the following is not a requirement for a valid adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act? Options are देखिए, the adopter must be Hindu. The child must be legally available for adoption. The child must be biologically related to the adopter, and the consent of the child if over of a certain age. Okay. So in this case, the correct option would be option C. That means the child must be biologically related to the adopter. That means क्या बोला देखिए, विच इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड एडॉप्शन. दैट मीन्स इंडिया में अगर कोई भी वैलिड एडॉप्शन किया जाता है अंडर द हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, तो इनमें से कौन सा है जो रिक्वायरमेंट नहीं है? द एडॉप्टर मस्ट बी ए हिंदू, दिस इज द रिक्वायरमेंट. ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट. द चाइल्ड मस्ट बी लीगली अवेलेबल फॉर एडॉप्शन, दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट. The consent of the child if over a age is, it is also requirement, but the child must be biologically related to the adopter, this is not the requirement as per the provision of the adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act. So in this case क्या होगा? Option C would be the correct answer. So now on to next question. Next question is, under the Hindu Marriage Act, what is the maximum number of wives a Hindu male can have? That means क्या बोल रहा है? हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, ओके, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, दैट इज 1955 के अनुसार एक हिंदू मेल को कितना वाइफ रखने का राइट और परमिशन दिया गया है, ठीक है. सही, द ऑप्शंस आर 2, 1, 4, no limit. So in this case, the correct option would be, as you all know, that option B. That means 1. That means a Hindu husband cannot take husband under the Hindu Marriage Act 1955 cannot have more than one wife. Okay, so in this case, option B would be the correct answer. Okay, that means one monogamy is the rule. That means only one husband or wife. So in this case, क्या होगा? Option B would be the correct answer. So now moving to next question, and this is the last question. Okay, what is the principle of equal rights in the family? Okay, in family law, what is the principle of equal rights in family law? Options are देखिए, only father have the right, both parents have equal rights over the children. So in this case क्या होगा? Option B would be the correct answer. That means equal rights means क्या है? Equal rights means both the parents have equal rights, both the parents have equal rights over the children. Okay, so in this case क्या होगा? So in this case option B would be the correct answer. So this is for all today. If you liked this lecture, please like this video and please don't forget to subscribe this channel. Okay, thank you very much. See you in the next video.